हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू सोम ट्यूटोरियल पिला माने जेपरि कि आमे एसी इंग्लिश रो लॉन्ग सिलेक्शन क्वेश्चन गुडी को डिस्कशन करूथिले आज रो क्लास रे भी मध्य आमे दुईटी लॉन्ग क्वेश्चन को आलोचना करबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन टी देखो, डिस्कस द वेरियस स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो एथिरे आमे लेखिबा जे कम्युनिकेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेप्स each playing a crucial role in conveying message effectively. Understanding the communication process can help individuals improve their communication skill, ensuring that their message are conveyed clearly and accurately. This article will explore the various steps of communication process, providing insight into each stage. तो ये भाव में इंट्रोडक्शन लिखि पारिबा। तापर देखो पिला माने स्टेप 1 रे कोन हुए ना आइडिया रो फॉर्मेशन होई थे, आइडिया फॉर्मेशन। तो इन स्टेप 1 द कम्युनिकेशन प्रोसेस बीइंग विथ ए आइडिया फॉर्मेशन where the sender generate an idea or message they want to convey. This stage involves clarifying thoughts, defining the purpose and identifying the target audience. तापर देखो सेकंड स्टेप रे कोन हुए एनकोडिंग होई थाए। वंस तो आइडिया फॉर्म तो आइडिया फॉर्मेशन परे कोन हुए तो सेंडर एनकोड्स द मैसेज कन्वर्टिंग इनटू ए फॉर्मेट that can be transmitted. Encoding involves selecting words, symbols or gesture that convey the intent meaning. तापर थर्ड स्टेप रे कोन हुए चैनल सिलेक्शन। The sender then selects the channel to transmit the message such as verbal, non-verbal, written or visual or audio visual. The choice of channel depends on the message, audience and पर्पोज। तो चैनल चॉइसिंग बा सिलेक्शन ऑफ चैनल्स कहा ऊपर डिपेंड करे पिला माने मेसेज ऑडियंस आउ सी इन्फॉर्मेशन रो पर्पस ऊपर डिपेंड करि थाए। तापर देखिबा ट्रांसमिशन हेउची फोर्थ स्टेप जाकी तो एनकोडेड मैसेज इज देन ट्रांसमिटेड थ्रू द चूजन चैनल। This stage involves delivering the message to the intent recipient. तापर फिफ्थ रे कौन हुए डिकोडिंग। फिफ्थ स्टेप देखो द रिसिपिएंट रिसीव मैसेज एंड डिकोड्स इट, इंटरप्रेटिंग द मीनिंग। डिकोडिंग इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द वर्ड, सिंबल और जेस्चर यूज्ड इन द मैसेज। तापर सिक्स स्टेप रे कौन हुए फीडबैक। After decoding the message and recipient provides feedback responding to the sender. Feedback can be verbal or non-verbal and helps the sender to guess the effectiveness of the communication. तापरे सेवन स्टेप रे कोन होय पिला माने नॉइस रिड्यूशन। तो throughout the communication process noise can interfere with the message, causing misunderstanding or misinterpretation. Noise reduction involves minimizing distraction and ensuring clear communication. The noise reduction कौन हुए जे distraction को minimize करि थाए आउ clear communication को ensure करे। तापर देखिबा फैक्टर्स अफेक्टिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस बा कम्युनिकेशन प्रोसेस रे के सब फैक्टर्स गुडी को अफेक्ट करि थाए। तो देखो प्रथमे लैंग्वेज बैरियर। डिफरेंस इन लैंग्वेज और डायलेक्ट कैन क्रिएट द बैरियर्स टू अंडरस्टैंडिंग। तापर कल्चरल बैरियर, कल्चरल नुआंसेस एंड कस्टम्स कैन इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन स्टाइल। तापर emotional state, the communication emotional state of the sender and recipient can impact the communication process. तापरे environmental factors, physical environmental noise level and distraction can affect the communication process. तापरे देखिबा effective communication strategy एथिरे हमें ऐड करि पारिबा जे कि भरी भाबरे हमें हमर कम्युनिकेशन स्टाइल को बा कम्युनिकेशन स्किल को आहुरी इफेक्टिव करि पारिबा। टू एंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रेटजी एभली भाबरे हमें मेंशन करबा। तापरे लिखिबा जे तापरे क्लैरिफाई द मैसेज, एंश्योर द मैसेज इज क्लियर, कंसाइज एंड वेल डिफाइंड।
तापर यूज एक्टिव लिसनिंग, पे अटेंशन टू द रेसिपिएंट एंड रेस्पॉन्स एंड एडजस्ट द कम्युनिकेशन अकॉर्डिंगली। तापर चूज द राइट चैनल, select a channel that suit the message audience and purpose। तापर minimizing the noise, reduce distraction and ensure the conductive communication environment। तापर conclusion आमे लिखि परिबा, the communication process involve multiple steps, each critical to conveying the message effectively। by understanding the various stage of communication process and implementing effective communication strategies, individual can improve their communication skill, ensuring a clear and accurate transmission of message, whether personal or professional। active communication is essential for building relationship, achieving goal and resolving conflict। तो ये थिला पिला माने हमर फर्स्ट क्वेश्चन आउ आंसर। तापर आमे आ गोटे क्वेश्चन को आलोचना करिबा। तो देखो, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आम समस्ते पढ़ीचे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन, तो ताको ही आमे लॉन्ग क्वेश्चन मध्य रे लिखिबा। तो देखो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन बी द बैकबोन ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। Understanding the advantages and disadvantages of verbal and non-verbal communication can help individuals to convey their message more effectively। तो ये है इंट्रोडक्शन। तापर आमे verbal communication कौन लिखिबा। देखो, verbal communication involves using words to convey a message either through spoken or written word। तापर यार advantages कौन कौन लिखिबा। इमीडिएट अंडरस्टैंडिंग, ये होची यार फर्स्ट एडवांटेज। verbal communication allows for quick exchange of ideas and instant feedback, making it ideal for situation requiring fast response। तापर इमोशनल एक्सप्रेशन, tone of voice and word choice can effectively convey emotions, adding depth and nuance to the message। तापर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडाप्टेबिलिटी, verbal communication also allows for a spontaneous and dynamic interaction, enabling participants to adjust their communication style based on the context and needs of the conversation। तापर establishing rapport, तो verbal communication foster a personal connection between individual and building trust and rapport। तापर however verbal communication also has disadvantages। यहाँ देखिले में एडवांटेज गुड़ा को कौन सब अच्छी verbal communication रे देखिले इमीडिएट अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल एक्सप्रेशन, ये सब गुड़ी को तार एडवांटेजेस हला। तापर भी आम देखा डिसएडवांटेजेस कौन, तो मिस अंडरस्टैंडिंग जहाँकि स्पोकन वर्ड्स कैन बी मिस इंटरप्टेड and especially without non-verbal cues for clarification। तापर limited reach, verbal communication is restricted to those within hearing distance and can't be easily documented for future reference। तापर cultural barriers, language differences can create obstacle in understanding। तापर no permanent record, verbal communication lacks a permanent record, making it less reliable for future references। तापर एटा हला verbal communication देखिले भी एबे आमे देखिबा non verbal communication। तो non verbal communication involves conveying message without using word through facial expression, body language and gesture and tone of voice। Its advantages include, advantages गुड़ी को आम तापर लिखिबा। प्रथमे इमोशनल इम्पैक्ट, non-verbal cues like facial expression and body language can effectively convey emotions and build rapport। तापर universality, non-verbal cues can transcend cultural barriers, promoting understanding even without shared spoken languages। तापर क्विक कम्युनिकेशन, non-verbal cues can be quicker to understand than spoken words, especially for simple messages।
enhance verbal communication. Non-verbal communication complements and enrich verbal communication, providing additional context. ଏବେ ଆମେ ଏହାର disadvantages ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ open to misinterpretation. Non-verbal cues can be subjective and interpreted differently across culture and individuals. तापर limited complexity, तो non-verbal communication is not suitable for conveying complex ideas and detailed information. Concept depend. Non-verbal cues can vary depending on the situation, making interpretation challenging. तापर cultural variation. तो non-verbal cues can have different meaning in different culture. तापर एटा थिला पिला माने हमर disadvantages. आमे प्रथमे verbal communication को दर्शाइले, तापर तार एडवांटेज डिसएडवांटेज देखिले, तापर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रो ठीक से परी एडवांटेजेस आउ डिसएडवांटेजेस को आलोचना कले। तापर इन कंक्लूजन आमे लिखिबा बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हैव देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अंडरस्टैंडिंग दिस कैन हेल्प इंडिविजुअल चूज द most effective communication method for their message and audience. By combining verbal and non-verbal communication, individual can convey their message more effectively and build stronger relationship. तो यह थिला पिला माने हमर advantages and disadvantages of verbal and non-verbal communication. तो प्रथम क्वेश्चन टी आमे देखिले वेरियस टाइप्स ऑफ वेरियस स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तापर आमे डिस्कशन कले एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आशा करछि समझते बुझी पारिथिबो। आ जे मानकर भी डाउट रहिछि ताहेले मते कमेंट करिकि पचारे पारिबो। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू सोम ट्यूटोरियल।